A very good evening to all of you guys. I am Vasudha Singh and I welcome once again all of you onto Defense Mania. So आपको पता है कि आज AFCAT का रिजल्ट आया है and I've seen that a lot of students are able to clear the examination not just by clearing of the cutoff but also with good amount of marks. So yes, on the behalf of Defense Mania team, I want to congratulate all of you, and yes, I want to say that you guys made us proud by being continuous into the class, by preparing really well, as well as especially a message from Sahil sir that he has seen almost 180 to 200 screenshot of yours and he feels very proud. So yes, a very thank you and yes, a very proud moment for all the aspirants out there from Defense Mania team. अब आते हैं गाइज कि जिनका क्लियर नहीं हुआ है AFCAT एग्जामिनेशन. सो यस, फर्स्टली आप ये बात सुनो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिसका क्लियर होता है और जिसका क्लियर नहीं होता है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सम क्वेश्चंस. ठीक है, आपके अगर इफ यू आर एबल, आपका कट ऑफ इज 157, ऑलराइट, उसके बाद इफ यू आर एबल टू स्कोर गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, इट मीन्स आपका प्रिपरेशन भी काफी अच्छा था, बट you have experienced a lot of papers, you have practiced a lot, as well as the thing that actually lack in clearing the paper and not clearing the paper is just your practice. You actually learn from the concept of not clearing the paper कि आपका पेपर क्लियर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने शायद से ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया है, शायद आपका अटेम्प्टेशन ज्यादा नहीं था, शायद आपने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर ली है, मे बी यू कैन से दैट आपने जो पढ़ा था आपका वहां से नहीं आया. सो लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली गोज ऑन इन टू योर एग्जामिनेशन, एज वेल एज गाइज आपका माइंडसेट. उस दिन जो आपका माइंडसेट होता है बहुत ज्यादा मैटर करता है. इफ यू आर वेकिंग अप विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, so you will be going into the flow of the examination. Otherwise कुछ ना कुछ, अगर if you take that much of pressure in the examination itself, तो आप एक क्वेश्चन नहीं गलत करते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करते हो just because कि you take a lot of pressure into that. So please understand the fact that you should learn from all these mistakes. इस बारी पेपर क्लियर नहीं हुआ, it's okay. You are human being, I am a human being, आप भी human being हो. We are tend to make mistake, but we should learn from our mistakes. This is what I want to say, that please, जिनका भी पेपर क्लियर नहीं हुआ है, do not get bogged down by it. It is not the end of the world. It is really not the end of the world. As well as जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, very well, very good. As well as आपको देखना चाहिए कि अब आपके मार्क्स कैसे और इंक्रीज हो सकते हैं. जिसका नहीं हुआ है, प्लीज मेक इट श्योर इन नवंबर यू आर हैविंग सीडीएस एग्जामिनेशन, इन फेब्रुअरी यू विल बी हैविंग CDS as well as AFCAT examination. So please make it sure you have good amount of time. You can introspect yourself. आज बैठो, रात को बैठो, सोचो कि पेपर में क्या गलत हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक्स थी, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट था, क्या मेरा माइंडसेट था, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मैंने छोड़ा, एंड क्या गाइडेंस रहा. एवरीथिंग जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन योर डेली रूटीन. ठीक है, इट इज समथिंग दैट विल टेक टाइम. आपको नेक्स्ट पेपर के लिए जब भी प्रिपेयर करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर जो आपकी गलतियां हुई हैं पिछले पेपर से, यू डू नॉट रिपीट दैट. एंड टू डू दैट यू हैव टू फर्स्टली इंट्रोस्पेक्ट, कि सोचो, अपना सोचो कि पेपर में क्या गलतियां हुई हैं मेरे से, सिंपल, एंड राइट इट डाउन और उसको डेली रूटीन में लाओ. मान लो इस बार अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो मेक इट श्योर, मेक इट अ स्टार ऑन योर नोटबुक कि नेक्स्ट पेपर के लिए आई मेक इट श्योर कि मैं इतने मॉक टेस्ट, इतने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करूंगा या करूंगी. सो दिस इज हाउ यू डू इट. एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज डू नॉट गेट रेस्टलेस और बॉग डाउन बाय योर रिजल्ट. ठीक है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके. It's okay to get exposed to your vulnerabilities, and yes, to make yourself strong. By what? By doing practice each and every day. Do not even skip one day of your practice. All right. The second thing is that guys, you need to understand कि जिनका last attempt था, फर्स्टली जिनका पेपर हो चुका, जिनका पेपर क्लियर हुआ, गुड फॉर देम एंड गुड फॉर योर SSB दैट इज कमिंग ऑन योर वे. यू शुड प्रिपेयर रियली वेल. एंड आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि 157 अगर आपका कट ऑफ है एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर 158, तो वो बच्चे प्लीज घबराओ मत, बिकॉज यू हैव वन बिग थिंग इन योर हैंड, एंड दैट इज योर SSB.
ठीक है। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि 200 से ऊपर ही स्कोर करोगे तो ही जाके आपका एकेडमी, यू कैन गो टू द एकेडमी। Even if you are scoring wonderful in SSB, it will somewhat compensate your marks. So, एक चीज याद रखो for the rest of your life. The thing is that जो चीज चले गई है वो चले गई है, okay? जो चीज आ रही है, you know that. Target that. Focus on that. Put all your energy onto that thing to clear that with good amount of marks. Alright, the person who has cleared the cutoff with 158 marks and the person who has scored 245 marks even, सिंपल सी भाषा में ये है कि आप दोनों ने SSB में ही जाना है। You will be there, the topper will be there as well as the person who has just cleared the cutoff from just 1 marks. That person will also attend the same SSB. As simple as that. आपकी भी साइकोलॉजी टेस्ट, GTOs, इंटरव्यू सब कुछ सेम रहेगा। अब आपके हाथ में है how exactly you grab that opportunity. Alright? So please do not get overconfident. Please do not get underconfident by your SSB, by your AFCAT results. But make it sure that in the next process you will be giving your 100%. Alright? And yes, जिनका last attempt था, so please make it sure कि this is not the end of the world. दुनिया खत्म नहीं हो रही है। एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स दैट इन विच यू आर गुड एट। ऑलराइट, देखो मान लो अगर आपके SSB के सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, इट्स ओके। फर्स्ट कीप योर माइंड काम, शांत हो जाओ कि ओके फाइन, आई एम नॉट एबल टू गिव मोर SSBs। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? गूगल सर्टन थिंग। आपके जो स्किल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि आप अभी के लिए कहाँ फिट बैठते हो। what is your next step? Focus on that. Instead of getting into the past of it, please focus on your future. So the main thing is that you need to keep your mindset very, very optimistic. Alright? And everything is possible, guys. The thing is that you firstly need to dream it. The second is that you need to believe it. And third is very, very important. उस पे जी जान लगा दो फिर। Then there is no day and night की अभी मैं ये करूंगा अभी ये, nothing will be there. You just have to fall into the place. Alright? And yes, for now, I'll be talking about the candidates who will be going for the SSB. Firstly, congratulations to all of you from specifically from Defense Mania team. We feel very, very proud of you guys. आपने बहुत मेहनत की है for the regular classes that were going in the morning, evening, as well as the classes you guys were taking. The marathon classes were there. So very, very congratulations. And yes, आपने seriously आज हमें we feel very proud on you guys. All right. So it's just not you guys. It is a collaboration of all the efforts from the previous months. Please remember that. It is also a teamwork. Alright. And thank you so much for all your efforts. Alright. And yes, now coming on to the SSB part, आपको पहले जानना पड़ेगा। आज तो पार्टी कर लो, मैं भी खुद बोलती हूँ कि just enjoy to the fullest. कल भी पार्टी करो in fact. But परसों से please get back onto your toes. Please get back onto your track. Alright. कि you have your SSB, you have this date of your SSB. Alright. अगर आपका SSB 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, start preparing as soon as possible. First thing is you need to get yourself into good physical position. All right, good physical stamina should be there, because every process, not just running, not just your GTO task, but your interviews and your psychology will take up your physical stamina. All right, physical stamina actually develops your mental stamina and vice versa. All right, so please make it sure कि आप सबसे पहले अपना physically fitness को attain करें, ठीक है? उसके बाद आ जाइए कि next चीज है कि करना क्या है. Next चीज, the most important part is that what do you have to do? The best and the most simple thing is that you need your laptop or your mobile and just your headphones and a normal internet connection. Simple as that. Pen copy लो. अब आपको पता है कि steps ये हैं. Psychology, interview, GTOs. ठीक है? अब क्या करना है? Simple जाओ Google पे या YouTube पे. You will get an ample of information. Believe me with that. All right, and you just need to write it down कि क्या है, process क्या है. Talk to your seniors, talk to whatever person who is associated with the forces, and he can guide you or she can guide you. Whatever possible resources are there, get information, and then what do you have to do? आपने देखना कि आपकी qualities and वो वाली जो qualities जो चाहिए वो कहाँ किस level पे आके match करती हैं. All right, so please get yourself very equipped with all the information, and उसके बाद आपको उस चीज को daily routine में लाना है. ठीक है? So there has to be a lot of things
things that will go into the process of it. And yes, in Defense, on this platform, in Defense Mania, we are planning to make videos on every specific thing. For example, PP&DT, your OIR, your psychology, GTOs, interviews, every video will be coming up. But yes, it is not a one-way process for all of us. It has to be a two-way process. The thing I want to say is कि अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आती है, तो please make it sure that you are able to, tell us. Just get on to Defense Mania, हमें बताओ कि मैम, सर, हमें ये वीडियो की जरूरत है, इसको कैसे करना है. Get the best out of this platform. All right. So the only thing that I want to say all of you that please make your mindset confident. Please make yourself confident, and please be optimistic about your upcoming future and work really hard towards that. And yes, in Defense Mania, we are here to help you. We would love to give all of the content, all of the data that is out there out of our best capability to all of you, so that we can see you in uniform. That absolute pride day, we are basically moving towards that each and every day. All right, so please work hard. And yes, अगर कोई आपको लगता है कि ये वीडियो भी होना चाहिए, ये कंटेंट भी होना चाहिए, प्लीज मेक इट श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में आप उसको प्लीज रिप्लाई करें, एंड वी विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. एंड यस, आज आई थिंक यू शुड बी enjoying your result, and you should have good time with your family and friends. And moreover, who has not cleared, please do not get bogged down by it. It's okay to accept your mistake, be vulnerable, and yes, practice each and every day and get strong each and every day. So with this, I'll be ending this video. I wish you all the very best. कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज we feel that this is something that is not coming onto the platform or not available anywhere, please let us know into the comment box. And yes, a huge thank you from the Defense Mania team to all of you for giving us so much support, as well as you guys make us proud. So this has to be a two-way thing. So yes, I want to say that all the very best for all the future endeavors, and please be spontaneous so that we can come up with new videos out of your SSBs. All right, thank you so much guys, and have a great night ahead. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.